Hello my dear students, welcome back in EVS class. I am Jakpreet Kaur, your EVS teacher of Art and Progressive School. Dear student, in the previous video we have covered our chapter number 2, that is our body parts. Now in this video we will start a new chapter, that is sense organs. So let's start. So dear student, we know about our world by seeing, hearing, touching, smelling and even by tasting the different things that we eat. So the body parts that help us to see, smell, touch, hear and to taste are eyes, ears, nose, skin and tongue. Okay, by the eyes we see the world, okay, and by ears we hear the different sounds, and by the nose we smell different aromas, we can say, okay, and by the skin we feel whether the thing is cold or the hot, okay, कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है या फिर कैसा उसका टेम्परेचर, एवरीथिंग दैट वी feel with our skin, okay, and we taste the different dishes, okay, by our tongue, whether the thing is sweet or bitter in taste or salty in taste, everything that we recognize by tasting the dishes that help us to with the tongue. Okay, now dear students, let's understand about all these organs, all these body parts one by one. So your first sense organ is eyes. Our eyes help us to see the beautiful world around us. Watching our favorite television show, read a book and see people and things, our eyes work like a camera. ओके, हम अपनी आइज़ की हेल्प से क्या करते हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हैं. वी वॉच अवर फेवरेट टेलीविजन शोज़, देन वी रीड द बुक ऑल्सो एंड वी सी द पीपल्स एंड द थिंग्स. एंड जो हमारी आइज़ है, इट वर्क्स लाइक एन कैमरा. वट एवर द थिंग्स दैट वी रीड और वट वी सी, इट्स रिकॉर्डेड इन अवर ब्रेन. Okay, then they record the sights around us and send the message to the brain. हम जो भी चीज़ देखते हैं या फील करते हैं, ओके, और जो रिकॉर्ड हो जाता है वो कहाँ तक जाता है, वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन तक. Then the brain read the message and tell us what we are looking at. और जो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है तो वो हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं. Some people cannot see things very clearly. Okay, so the peoples those cannot see the things very clearly, they use or they need to wear the spectacles to see better, or we say the specs. ठीक है, ताकि उन्हें अच्छे से दिखाई दे. कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइट क्लियर नहीं होती है, तो वो क्या पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं. दे वियर स्पेक्ट्स. Okay, next is our ears. Our ear help us to listen to the chirping of the bird, honking of the cars and the buses, bursting of the crackers and all other sounds around us. Okay, हम ears की help से क्या करते हैं, different types of the sounds हम सुनाई देते हैं हमें, है ना. जैसे कि whether the cracker are bursting, the birds are chirping or the buses are going, okay, then the ears collect the sound and send the message to the brain. As the when we see from the eyes, then the message sent to the brain, the same way जब हम किसी voice को सुनते हैं, then also the message goes to the brain and then the brain tells us what the sound is. ओके, तब हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये साउंड कौन सी है एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग. ओके, देन इट्स ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड इज़ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. प्लीजेंट मीन्स जो साउंड है वो अच्छी है, या फिर अनप्लीजेंट मीन्स जो साउंड है वो क्या है,
एक शोर है. Okay, that is unpleasant sound, like honking of an vehicles. Okay, are an unpleasant sounds. Okay, or the sound which are loud, very loud, are also an unpleasant sound. Unpleasant sound कौन से होती है, यानी कि जो अच्छे sound से वो क्या होती हैं, जैसे कि when you play a guitar or when you play an harmonium. Okay, so these are an unpleasant sounds. Some people who cannot hear well wear hearing aid. जो लोग अच्छे से सुनाई नहीं देता है जिन्हें, वो क्या करते हैं, हियरिंग एड पहनते हैं. ठीक है. एंड दिस इज एन मशीन, और वी कैन से इट इज एन स्मॉल इंस्ट्रूमेंट worn in the ear. And some people who cannot hear at all, sometimes those who are born without the sense of hearing cannot speak either. कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं या तो जिन्हें कम सुनाई देता है, तो वो क्या करते हैं, हियरिंग एड पहनते हैं. ओके, बट सम ऑफ द पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि बाय द बर्थ वो सुन नहीं सकते, और जो सुन नहीं सकते बाय द बर्थ, दे इवन कैन नॉट स्पीक ऑल्सो. सो दे लर्न टू यूज द साइन लैंग्वेजेस. ओके, तो उन्हें कैसे समझ में आती चीज़ें, ये कैसे पढ़ते हैं वो, साइन लैंग्वेजेस से. एंड आर एबल टू कम्युनिकेट वेल. जब वो साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर स्किन. द स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील. ओके, it covers our entire body, means in our entire body you can see that skin is there, and it tell us if something is hot or cold, smooth or rough, hard or soft. जब हम किसी चीज़ में हाथ लगाते हैं तो वो हमें पता चलता है कि वो चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है, प्लेन है, स्मूथ है या फिर रफ है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है. ओके, so you can tell your mother that the milk in the glass is hot or cold. जब आपको कि मम्मी आपको मिल्क देती है ग्लास में, ठीक है, तो आप ग्लास को होल्ड करके और उसको टच करके ये बता सकते हो वेदर द ग्लास इज हॉट, ओके, और द मिल्क इज हॉट और द कोल्ड. ओके, सो बाय टचिंग द ग्लास एंड you can feel it through your skin. Okay, now next is your tongue. Name some of your favorite food items that you are eating daily. Why that food items are your favorite? Because you know the taste and you like the taste of that food items. That is why that foods are favorite for you. Okay, so do you prefer chocolates and ice creams which have a sweet taste, or a potato chips and fries that are salty, or tamarind pickle which is sour in taste? Sour in taste यानी कि खट्टा जो होता है टेस्ट में. ओके, देन our tongue help us to taste. Okay, there are taste buds in our tongue. हमारे जो टंग है उसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी द टंग. आपके जो फ्रंट पार्ट है टंग का, उसमें से यू कैन फील दैट द चॉकलेट इज स्वीट इन taste. Okay, and from the side portion you can identify whether the taste is salty or not, and from the last or the back side you can see, you can feel that the thing is bitter in taste, यानी कि कड़वा है टेस्ट में. Okay, so these are the words that tells you about the different taste of an eating things. Okay, or we can say the food items. Next is your nose. Our nose help us to smell. It picks up both the good and the bad smell. Okay, from the smelling the things we can identify that the smell is good or bad in. Okay, and then this smell, whether it is good or bad, it sends the message to the brain again,
as in it is sending in the case of the when we are seeing from the eyes and when we are hearing from the ears. Okay, we are feeling from the skin, or we are just getting the taste of in food items. Everything is every message is sent to our brain. Okay, then the brain tells us what the smell is and if the smell is good or bad. हम कोई भी जैसे द गुड फूड इज़ देयर, टेस्टी फूड इज़ देयर, ओके, तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाता है दैट द स्मेल इज़ वेरी गुड. ओके, जो बैड स्मेल आती है तो दैट ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट द दिस स्मेल इज़ bad. Okay, so this information is given by our brain. Okay, so now the brain is again very important part that I have told you in the chapter number 3. Okay, this is an internal body part or the internal organ that help us to control the activity that we are carried out, and it also controls the sense organs also. Okay, so the sense organs are also controlled by the brain. जो सेंस ऑर्गन है वो भी हमारे ब्रेन्स की हेल्प से कंट्रोल होते हैं. ओके, so dear student, I hope you understood about all the 5 sense organs and how it functions. Now in the next video we will continue over this chapter. So till then, keep learning, stay safe and stay healthy.